हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है व्हाट डू अमेरिकन यूट्यूबर थिंक अबाउट इंडिया। सो एक यूनिक किस्म का टाइटल है और लेट्स सी कि क्या मेरे ख्याल से ये वो वाले यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने विजिट किया इंडिया और उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस अमेरिकन यूट्यूबर्स हैं। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान इस रीजन को विजिट किया हुआ है फूड व्लॉग्स के लिए। ख़ास तौर पर फूड यहाँ की बड़ी अट्रैक्टिव होती है, तो लेट्स सी ये कैसा रिव्यू। फूड और नॉर्मली जो कलरफुल कलर नज़र आते हैं ना इस रीजन में, वो एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ बन जाती है हम लोगों के लिए। बाकी लेट्स सी द वीडियो। और वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि हम इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, तो हमारी वो आईडी का लिंक भी आपको मिलेगा, हमारा दूसरा चैनल उसका भी लिंक आपको मिलेगा। और इस चैनल को आपने हर किसी सब्सक्राइब नहीं करना, ठीक है? क्योंकि इस बंदे की बातों में नहीं आना, सब्सक्राइब करना है लाजमी, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं करने का। लेट्स सी दिस वीडियो। लेट्स सी दिस वीडियो, गो। नमस्कार, कैसे हैं? मेरा नाम कार्लोस। The way I look at the world is like there's two different travelers. The ones who have been to India and the ones that haven't. I had complete wrong impressions about India. India is such a colorful country. The spice, the sweetness, the cheese, you can't go wrong. That is biryani. Hey guys, Julia here. In my previous video, I asked some fellow YouTubers from Europe what they think about India. So I thought, shall I do the same for my fellow YouTubers from America? That's what I did. Are you curious? Check it out. Okay. First thing that comes to mind when we think of India. Chaos. No, I love it. Friendly and incredible hospital people and delicious food. Some of the best food in the world, 100%. The first thing that comes to my mind when I think about India is the sadhus. There are many near the city that I live, and I've always found it inspirational. It's chaotic. It's mysterious. It's magical. Food? Food is the first thing that comes to my mind because I am a chow hound and I am obsessed with Indian food. I actually order it at least one time a week. I would say colors. India is such a colorful country, from just like the clothing that they wear to the food that they eat to how colorful the people are. My favorite Indian food or dish, there is no hesitation, that is biryani. The real question to this is, which biryani? Let's not start a debate, let's just give my top three. The Hyderabad biryani, the Kolkata biryani, and the biryani from Calicut or Kozhikode, whatever you want to call it, in Kerala. You cannot beat a biryani. It's an emotion that goes into your heart. Bani Puri, which is right here. Bani Puri is the best. It's crunchy, it's cheap, it's so satisfying. They make a hole in it, they put like bani, which is the water, with some tamarind chutney. They put chickpeas, onions, potatoes. I mean, it's so delicious. You just keep popping them. My favorite Indian dish is currently lamb korma, and I usually get that with paneer naan. And I also love Pindi masala. Oh my goodness, if you've ever had Kodzura and Kolkata, so good. Chole bhature, pani puri. What is the one where you eat it with your hand and you like rip up? It's like a I big think it's dough. chole bhature. Oh, is it? Oh, that one's my favorite. You can like pick up some pepper, and eat pepper, and you know the sauces out of like a metal tray. My favorite Indian food is paneer butter masala, and on my first trip to India, I crave that every single day. I still love it. I could eat it every day and be completely happy. The spice, the sweetness, the cheese, you can't go wrong. Favorite city? Kolkata Good is my question. favorite Kolkata. of the major cities. I really enjoy Bengali culture. The food is unreal. Lots of seafood, lots of fish. It's a good mix in between like Mumbai and Delhi in terms of how how populated it is. It's a huge city. One city I would most like to visit is Jaipur. I hear they have great festivals, really nice old and new architecture, and I suppose Jaipur has the nickname the Pink City, which sounds really charming. My favorite Indian city, right away, I have two, and it's a battle for them. It is Kolkata, the old capital of India, as well as Kozhikode in Kerala. The reason being is because both of these are major food hubs in India. You will get some of the best biryanis and the most delicious street foods in India in these cities. Kolkata was my favorite, and I know that that's probably not on anybody's bucket list. My favorite is actually New Delhi. Everyone in Delhi was so forward and nice. Yes, I love Indian forwardness. Yeah. My favorite Indian city is Varanasi. I spent 3 days there and did the typical things, the sunrise boat tour, saw the Ganja Arti at night. I might be mispronouncing them.
but had a wonderful time. If there's one place that it seems like could shed a lot of light into what India is, Varanasi seems to be the place. One thing I loved about India, well, I gotta say the food. The food is the best food on the planet. The food is never ending. There's thousands of dishes, thousands and thousands. I mean, you can go, rice dishes, or you can go lots of breads, seafood, you got meats, you have beef if you really want, you have pork, you have endless. They say every 50 kilometers, people change, culture changes, food changes in India. One thing that I love about India is the diversity and the ancient temples. The complex and mysterious history found throughout all of India is just so appealing to me. It's such a draw. I don't want to see the giant opera hall, I just want to see the ancient temples. I don't know why I like that so much, but it's just so interesting to me. One thing, if I had to pick one, this is tough because it's gonna come down to either the incredible hospitality that you get from the people that you meet in India or the delicious food. Oh man, this is tough and I'm not picking a winner. I'm taking both. I'm greedy. I'm taking both. I love the hospitality that you get from the people and the amazing food that you get. I would say the openness of the people. Yes! The Indian forwardness. Cut the crap, tell me what's going on. Like, I want coffee. Yeah. No please, no thank you, right? Give me my coffee. And that has to translate in how you communicate as well, because when you say no thank you, it causes confusion. Yes! You're being polite, it causes confusion. So you say no. What a cool culture. One thing I love about India is the people. It's kind of heartwarming to see how interested they are in another culture and how willing they are to share about their families, to share about the best places to see in India, to help me out if I get lost or need some tourist help. So fun fact about me and my connection with India. So I'm 34 years old right now, and I didn't travel to India till I was 32. So the first time I went to India was back in 2018, January 2018. India was the hardest one, So like now, the way I look at the world is like there's two types of travelers. The ones who have been to India and the ones that haven't. And once you go there, you become addicted just because how exotic and diverse it is. I mean, it really is the most diverse country in the world. There's 28 states and just so much. It's really such a rich country. Yeah, I'd say the most interesting fact about me and my relationship to India is that when I was younger, I had the complete wrong impression about India. It wasn't even on my list of places I wanted to visit, and that was because of what the Western media was feeding me. My interest actually started when I was 15, and I saw a movie that had a Bollywood reference, and I realized at that point that Hollywood wasn't the only major film industry in the world, and India also had a major film industry. I was raised in the United States since I was 5 years old, but my background is Venezuelan, which is Latino, and overall, my people are extremely outgoing and friendly in Venezuela. You can spark up a conversation with anybody that you meet on the street, and that's something that I experience in India a lot. The people are extremely friendly and very, very outgoing. Anybody that you meet on the streets, you can talk to them, ask them something, and they're more than willing to help, and they'll keep talking, and eventually you make friendships like that. I've taken 641-ish portraits of people, and I hope to take many more. I would never be able to pull off the big billboard look. What? I want to be the sadhu who's just sitting on my bench, taking my nap, doing nothing all day, every day. Actually, right now I have 5 different states I want to visit. Sikkim, it's Himachal Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur as well, like with Nagaland, those 2 states, and then also Odisha. So I think the next trip is going to be one of those, either Bihar, Odisha, or Himachal Pradesh. I would love to visit the northeastern part of India when I go because I love seeing mountains, and I definitely want to see the Himalayas at some point. That just sounds so amazing. But also, which is maybe even more important to me, I want to see some of the temples. The top 3 on my list are the Brihadiswarar Temple, the Kailasa Temple, and the Shore Temple. Have to see those. A place I really, really want to go to is Kerala. Everybody and their mother has said that the south of India is God's country, that it's totally beautiful, that there's like plantations and beaches and great food, and so I want some of that. I want actually all of that. Well, perfect. I don't have anything to add. That was my place. Oh, yeah. Himachal Pradesh. That is a big one. And when I do go there, I need to learn how to ride a motorbike because I want to do it right. I want to get my motorbike and I want to just ride into the mountains and just freely enjoy it.
आइडिया बहुत अच्छा तो वेयर डू यू वांट टू गो इन इंडिया? मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारा घूमना पड़ेगा। सारा कोई एक जगह नहीं जाना चाहते? नहीं, सब जगह जाएंगे, बंदा जाए तो फिर तसल्ली से घूम फिर गया। बाद फिर 2-3 साल बाद वापस आएगा, इतना बड़ा वीज़ा नहीं मिलेगा। एक दिन में तो फिर नहीं सकता। कोई नहीं, 3 महीने का तो मिल ही जाता। ओके, तो काफ़ी सारी अच्छी बातें इंडिया से रिलेटेड, लेकिन एक जो कॉमन पॉइंट है वो फूड। हर किसी ने मेंशन किया फूड को लाजमी। एग्जैक्टली, फूड हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, स्पेशली स्पाइसेस। और ये जो टेस्ट यहाँ पे मिलता है वो नॉर्मली आपको वेस्टर्न साइड पे अमेरिका में, यूरोप में नहीं मिल रहा होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है चीज़। उसके अलावा एक पॉइंट बड़ा अच्छा ऐड किया था उन्होंने कि जब आप किसी जगह को विज़िट करते हैं और जब आपने सिर्फ सुना होता है तो 2 जगह पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा चेंज हो जाता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि पहले तो मेरी विजिट लिस्ट में भी नहीं था, बट लेटर ऑन आई विजिटेड एंड ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों के साथ तो ये एक बहुत बड़ा इशू अभी भी है इन कंट्रीज़ के लिए कि एक जो आउटलुक बनी होती है वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, लेकिन जब एक बंदा आकर विजिट करता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू, मैं इसे कहूँगा कि ये इशू है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उतना अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ व्हाट दे हियर अबाउट इट। सेम चीज़ यहाँ पाकिस्तान में भी है कि पाकिस्तान का इंडिया को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा इतना अच्छा नहीं रहता था बिकॉज ऑफ मीडिया। ये हमने चीज़ तब ऑब्जर्व की जब हमने चिट चैट सीरीज़ में इंटरेक्शन किया लोगों के साथ, डिफरेंट चैनल्स के साथ। उनसे ये कॉमन क्वेश्चन हमारा ज़रूर रहता था कि आपका कितना चेंज आया आपका इंटरेक्शन के बाद आपके माइंडसेट में इंडिया को लेकर। तो सबने यही ऑलमोस्ट सबने यही आंसर दिया कि हम पहले कुछ और समझते थे और अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया को लेकर बड़ा चेंज है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम चिट चैट सीरीज की ना पब्लिसिटी कर रहे हो या मुझे सिर्फ फीलिंग आ रही है? कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। Just wanted to make sure कि वाकई पब्लिसिटी तो ये तो अगर आपने नहीं देखी हमारी चिट चैट सीरीज तो आप जाकर अभी तो जैसे हमने ये वीडियो देखना शुरू की ना तो हमारे जहन में आइडिया है कि वेरी नाइस पॉइंट ऑफ पब्लिसिटी, तो हम साथ ही अब चिट चैट सीरीज की पब्लिसिटी शुरू कर दी। तो आओ हमारे चैनल पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ चिट चैट की प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करें, आपको 5-6 ये प्रॉपर पब्लिसिटी है कि एग्जैक्टली बता भी दिया कि कहाँ पे पड़ी, वरना आप चिट चैट पिंडी रिएक्शन लिखें तो भी आ जाएगा। तो और कुछ उसमें आप 5-6 एपिसोड मिलेंगे आपको, उसमें एक आध इंडियन चैनल भी है, बाकी पाकिस्तानी चैनल भी, हाँ इंडियन चैनल भी है। तो अगर आप चाहते हैं हम किसी और चैनल को उसमें बुलाएं तो उसका आप लिंक भी दे सकते हैं। ऐसे ये बातें हम चिट चैट सीरीज में करते हैं, जब आप देखेंगे तो हम ये चीज़ें हम बोल देंगे। बाकी ये वीडियो बहुत मजे, आइडिया बहुत अच्छा था और हमसे पहले इसका शुरू किया हुआ है, हमसे पहले का मतलब मैंने कहीं वो आइडिया मैं क्लेम नहीं कर दूं कि चोरी किया, कॉपीराइट नहीं क्लेम, आइडिया क्लेम, यू नो आइडिया क्लेम, पेटेंट राइट। ठीक है, बिल्कुल। खैर ये आइडिया अच्छा था और बड़ी अच्छी बात है। वैसे ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, जितने भी यूट्यूबर जब ये वो विजिट करते हैं तो उसके बाद एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से कुछ नया लेके आते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे एक ज़रूरत भी आती है कि हमने अपने कंट्री का इमेज बाहर पहुँचाना है किसी न किसी तरह। एक इंटरनेशनल चैनल्स आप हमारे लॉन्च हो सकें, इंडिया में पता नहीं है नहीं, पाकिस्तान में नहीं है कोई ऐसा चैनल जो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हो। हमारे यहाँ पर न्यूज़ भी ऑलमोस्ट रीजनल लैंग्वेजेस में ही होती है। तो पॉइंट इज एक ऐसा चैनल होना चाहिए जो जिसकी रेंज वर्ल्ड वाइड हो, जो आपका मैसेज बाहर की दुनिया तक लेके जा सके। आई थिंक इंडिया का है कोई, मुझे नाम नहीं याद अभी। फॉर एग्जांपल जैसे अल जज़ीरा है, मिडल ईस्ट का है, BBC CNN वेस्टर्न है, तो इस तरह कोई यहाँ इस रीजन का नहीं है मेरे ख्याल से। आपका हो गया, मैं बात कर रहा था अपनी वाली बात काट यार। एक तो ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहा था, क्या अब छोड़ो है, लेकिन मैंने नहीं काटी, मैंने नहीं काटी, मैंने कहा इसे बोल लेने दो, बोल ले जितना बोल सकता है। तो यार ये सब बोलने एक अच्छी बात तो करनी थी, मैंने एक अच्छा मैसेज दे दिया, चलो खैर नहीं खैर है। क्या है वो कपिल शर्मा वाला, उसकी एक्टिंग कर रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और कोई वीडियो आप चाहते हैं देखें तो उसका लिंक दे दें, और ये चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना आपने। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।